Okay, let's start this webinar. First of all, good evening, everyone, and very welcome to this webinar of Power BI. We will be working on a project and we will be completing this project. And our main focus is going to be to create a visually mesmerizing visual or report in Power BI. Okay. So, for this particular purpose, we will be starting with the very introduction of Power BI. What is Power BI and what to do, what we can do in the Power BI. So, let me introduce myself first. Myself, Rajat Kantwal, and I am Senior Data Analytics Trainer at Brillica Services. So, let's discuss about today's content, what we are going to do. First, we are going to understand the introduction of Power BI. What is Power BI and why it is used in the industry? Second, we will learn about the dataset. Actually, this dataset belongs to Zomato, and we will be learning about this dataset and we will be making visuals over this dataset. Third, we will create few problem statements around this Zomato dataset, and these problem statements will be helping us to to generate some answers, to generate some conclusions related to that. Fourth, we will be visualizing those problem statements. So that is why we will be able to create the reports and we will be able to create the dashboard and we will be able to present it to some stakeholders or to our client with the help of these visualizations. Then after that, we will be working on the report creation, how to visualize all the things together, how to visualize all the problem statements together. And then at the end, we will be reaching to our final words, our final conclusion. Okay. So let's start with the basic introduction of Power BI. See, Power BI is very famous tool nowadays in the market, and it is a business intelligence tool, you can say, or you can say it is a visualization tool. So visualization tool, अगर हम बोले इसे, so it is not only about visualization, right? We can create visuals related to our project, our problem statements, but it is also a business intelligence tool. Now, what is the meaning of business intelligence? Basically, whenever you are performing any data analysis over any kind of data, at that data, you will be you will be reaching to a conclusion. And when you are reaching to that particular conclusion, you are solving a business problem. So that is why whenever you take decisions related to your business, it is called business intelligence. That is why Power BI is also known as business intelligence and visualization tool. It is used to visualize your data. It will create some interactive dashboards, reports, and it will enable some data-driven decision making. So, like you can perform some aggregation over it, you can perform some analysis over it, you can perform some visualization, and you can share your report to any other person. So, this is the basic introduction of Power BI. Now, why do we need such tools in nowadays in the industry? So basically we are consuming a lot of data, right? Let's take an example. हम अपने डेली कंजम्पशन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा a large amount of data we are producing, right? We are watching Instagram reels, we are paying through any online medium, we are sharing our data, we are searching about anything through the online medium. So anything which is happening, that is happening through the online medium and your data is being stored somewhere. And companies think, why not to use this data for a particular purpose? And why not to analyze this data to understand the demands of their customers? So that is why they use such kind of tools like Power BI is there, Tableau is there. They use these kind of visualization and business intelligence tools, which are very helpful to take some business decisions. So that is why we are here today to learn these tools. One of these tools that is Power BI. And plus, we are going to create a project to understand that how company utilize your data to analyze things. Okay. Uh, so let's understand our workflow first, what we do on a project and how we are going to understand that project.
So whenever you are working on any project of data analysis, there are few steps related to that. First, you have to define why you need data analysis. Means what is your purpose behind doing this project? Like there are many problems in any company. There might be problem related to sales, or there might be problem related to their profit, or there might be a problem related to their customer retention, or any other problem might be there, right? So they will be picking up a objective first. Why you need this data analysis? आपको ये data analysis करना क्यों है? Is there any demand for that? क्या आपको sales बढ़ानी है, और you need to increase your profit amount, या फिर आपको कस्टमर रिटेंशन रेट बढ़ाना है? तो कुछ भी डिमांड हो सकती है रिलेटेड टू बिजनेस, और वो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा। इसे आप कंप्लीट डेटा एनालिसिस की प्रोसेस को मैं साइमल्टेनियसली आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके। सो जब भी हम एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ऑफ डेटा एनालिटिक्स, वहां पर वी हैव टू डिफाइन अ गोल फर्स्ट, एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। एंड इसी को मैं आपको आपके एक डेली लाइफ का एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपका एक प्रोसीजर क्या होता है? क्या आप डायरेक्टली फर्स्ट कॉलेज जो भी आपके सामने आता है वहां पर एडमिशन ले लेते हो? ऑब्वियसली नो। आप अपने लिए कोर्स डिसाइड करते हो कि विच कोर्स आई हैव टू परस्यू एंड व्हाट आर द प्लेसमेंट चांसेस, और प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है। ये सारी चीजें आप गौर करते हो, कौन कौन से कोर्सेज उस कॉलेज में अवेलेबल है, फीस कितनी है, फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है। और ये सारे कोर्सेज को आप सर्च करने के बाद, इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, देन आप अपने एक फाइनल गोल पर पहुंचते हो कि कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना चाहिए, कौन सा आपके कैरियर के लिए बेस्ट रहेगा। करेक्ट? ऐसे ही आपके कोई भी डेली लाइफ डिसीजन होते हैं, यू यू डू नॉट डायरेक्टली गो टू द कंक्लूजन। आप धीरे धीरे उससे रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, एंड देन उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हो। एंड आफ्टर कलेक्टिंग आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, देन यू विल रीच टू अ कंक्लूजन कि ये वाला काम मुझे करना चाहिए, ये वाला कोर्स मुझे लेना चाहिए, या ये वाला लैपटॉप मुझे लेना चाहिए, या कोई भी आपका डिसीजन हो, वो इसी तरह से किया जाता है। करेक्ट? तो दिस इज व्हाट डेटा एनालिसिस इज। एक्चुअली डेटा एनालिसिस आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, हर छोटे से छोटे काम से लेकर हर बड़े से बड़े काम पर। तो इसीलिए जब आप एक कंपनी पर जाते हो, वहां पर आपको एक वेल डिफाइंड प्रोसेस, एक लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट दी गई है। तो आप एक वेल डिफाइंड प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर के तहत डेटा एनालिसिस कर पाओ, क्योंकि डेली लाइफ में तो इतना इजीली हम कर पाते हैं क्योंकि छोटे डिसीजंस होते हैं, लेकिन कंपनी के डिसीजंस में भी इतने छोटे ना हो, इसलिए आपको एक बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना पड़ता है। तो दैट इज व्हाई फर्स्ट डिफाइन व्हाई यू नीड डेटा एनालिसिस। जैसे अभी मैंने आपको कॉलेज वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर इस एग्जांपल में योर गोल वाज वेरी मच क्लियर, राइट? कि आई नीड टू परस्यू अ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। So your objective is clear. In the same manner, in your company, you might be working on the objective related to the company, like how to increase sales, how to double the profit. So first, clear your objective, define your objective. What is your objective? Second, move to begin collecting data from sources. Now your objective is very much clear. You know that you have to take admission in any of the college. Then you will start collecting information regarding all the colleges. ओके? और जब आपके पास सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, तो तब आप पहुंचते हो अपने थर्ड स्टेप पर, क्लीन थ्रू अननेसेसरी डेटा। दैट मीन्स when you are collecting data, it might be possible that you will receive some like misguiding notifications, or you will receive some advertisements. Okay. So at that point of time, what you want to do, you want to focus on your research. You want to focus on your colleges, your degree, right? तो आप क्या करोगे? आप उन एड्स को या उन नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करोगे, उन एड्स को हटाने की कोशिश करोगे, राइट? जैसे एक यूट्यूब वीडियो का एग्जांपल ले लो। अगर आप यूट्यूब पर कुछ सर्च करने जाते हो, सडनली एक एड पॉपअप हो जाता है, तो हम वीडियो छोड़कर एड तो नहीं देखने लगते। वी ट्राई टू स्किप दैट एड so we can focus on video. Correct? So that is what your third step is.
क्लीन थ्रू अननेसेसरी डेटा, कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा डेटा आया है, मेरा गोल था कि कंपनी में सेल्स से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करना, बट नाउ आई एम गेटिंग डेटा रिलेटेड टू प्रॉफिट और डेटा रिलेटेड टू डिस्काउंट, डेटा रिलेटेड टू कस्टमर, so I do not want to look at that data. I want to focus on only sales data. Correct? So that is your third step, कि clean through unnecessary data, कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा डेटा है, और मे बी देयर आर सम एरर्स, वहां पर कुछ नल वैल्यूज हो सकती हैं, तो यू हैव टू क्लीन दैट डेटा। आपको अपने काम का डेटा आपके पास रखना है, उसे अरेंज करना है, एंड देन आफ्टर क्लीनिंग द डेटा you will move to your fourth step, that is begin analyzing the data. You have to analyze your data, but how? जनरली हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि डेटा एनालिसिस करना है, बट एनालिसिस करना कैसे? जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ कॉलेजेस, आपने कॉलेजेस के बारे में डेटा कलेक्ट किया, लेकिन फिर आपने उन्हें कंपेयर करने के लिए उनसे क्वेश्चंस पुट अप करना स्टार्ट किया, कि क्या कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, इस कॉलेज की फीस कितनी है, कोर्सेज कौन कौन से बेस्ट हैं इस कॉलेजेस में, या फिर आपने बोला कि अगर मैं मुझे डिस्काउंट चाहिए तो आप कितना डिस्काउंट मुझे प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, मैथ्स, हर चीज आपने देखी, और एट द एंड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में आप पहुंचोगे अपने फाइनल रिजल्ट पे, कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। करेक्ट? So, with the help of these small problem statements, you will be able to reach to your final conclusion. आप अपने final conclusion पर पहुंचोगे कि किस तरीके से, या मेरा क्या आउटपुट होना चाहिए, या किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, या फिर मुझे सेल बढ़ाने के लिए कंपनी में क्या करने की रिक्वायरमेंट है। ये आप समझोगे अपने इस पॉइंट से, अपने इन छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की मदद से। तो जब आपके इन सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के आंसर हो जाएंगे, तब आप पहुंचोगे अपने फाइनल फिफ्थ स्टेप पर, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, और यू कैन से कंक्लूजन। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। फर्स्ट, you have to define your goal. Second, collect your data related to that particular goal. Clean that data according to your goal and requirements. Fourth, analyze data with the help of few problem statements. And then reach at the fifth step, that is interpretation or the result of your analysis. Okay. So I hope it is clear to you, everyone. Any doubt in this? Devansh, Bhumika, Hafsa, Madiha, Prashant, Utkarsh, any doubt? No, sir. Okay. So this will be your life cycle of any data analysis project. And please remember, you have to keep repeating all these processes, all these steps until or unless you are done with your project. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एनालिसिस में you will not reach to your conclusion, or you will not reach to the right conclusion. So you have to analyze it again and again until or unless you reach the demand of your client or your stakeholder, for whosoever you are working for. Okay. So this is the life cycle of your project. Now, let's move to today's agenda. So we are going to work on a project which is related to Zomato, and it is Zomato's data on which Zomato's algorithm works. So whenever you are working on any project, other than this process, other than this life cycle process, you have to understand few things. That जब भी आपके पास डेटा आता है, first you need to understand that data, that this data is about what and what it is going to tell me, या जो इसके हेडर्स है, या जो इसका डेटा स्टोर्ड है, वो क्या चीजें मुझे बता रहा है। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, क्योंकि अगर मुझे डेटा क्लियर है, देन आई एम वेरी मच क्लियर विथ माई गोल ऑल्सो। और जब मेरा गोल क्लियर है, देन आई विल क्रिएट फ्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अराउंड माई गोल। जैसे कि अभी कॉलेज वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट करे वहां पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे कि कॉलेज की फीस कितनी है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, प्लेसमेंट कितना है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई थी। ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी बनाते हैं।
इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजुअलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट विजुअल. So you will visualize your problem, and then at the end, you will create a report out of those visuals which you have created. Okay? So this is going to be our workflow. First, I will share this data with you, and you need to tell me what you understand from this data. Then I will explain you actually this data is about what. Then we will create few problem statements around this data, and then we are going to visualize those problem statements. And at the end, we will be creating a report out of that data. Okay. So just give me a minute. I will be sharing your data with you in the chat box. I have shared data with you on the chat box. Please download this data. And there is an image file which will be helping us to create the report in Power BI. Okay, just a quick question. Do you all have Power BI installed in your system? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके. अगर किसके पास नहीं है तो प्लीज लेट मी नो. ओके. I hope everyone received that data. Now please open that data in the Excel itself. Later we will be going to Power BI. Let's first understand this data, what this data is about. तो आपको ऊपर जो दिख रही है ये रेस्टोरेंट आईडी, रेस्टोरेंट नेम, कंट्री कोड, सिटी, cuisines, average cost for two, has table booking. These all are headers of your columns. क्या इन हेडर्स की मदद से आप इस डेटा को समझ पा रहे हो कि ये डेटा किस बारे में है, क्या चीजें हमें बता रहा है? क्या कुछ पता चल रहा है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. सर वो 1 मिनट लैपटॉप में लोड कर रहा था ना डाटा, 1 सेकेंड. ओके. सर हेलो. हाँ बताओ. सर जैसे आपने ये मैं चैट में दे रखी है, तो ये मतलब डाउनलोड नहीं हो पा रही है. मतलब अगर मेरे को लैपटॉप में शेयर करनी है, मैं अभी फ़ोन में से ले रहा हूँ ना क्लास. नहीं, फोन पर अगर आप डाउनलोड करोगे तो यू कैन शेयर इट ऑन लैपटॉप ऑल्सो. आपको लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा ना. 1 सेकेंड सर. एनीवन एल्स? क्या कुछ समझ में आ रहा है इस डेटा को देखकर आपको? ओके, नो आइडिया. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीजें, एंड देन फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बनाते हैं इससे रिलेटेड. First, there is a column called restaurant ID. So what is that restaurant ID? Actually, हर एक रेस्टोरेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप पहचान पाओ कि रेस्टोरेंट दूसरे से अलग है. That is why we have provided a unique ID to each and every restaurant, and we are calling it restaurant ID. Just like your आधार कार्ड नंबर. अगर हम दो लोगों का नाम दें, let's say there is a name called प्रशांत. तो प्रशांत कई लोगों का नाम हो सकता है, बट हर किसी प्रशांत का आधार कार्ड नंबर सेम नहीं होता. Why? Because Aadhaar card is unique identification. So maybe total name, first name, last name exactly same हो, date of birth same हो, but Aadhaar card number same नहीं होगा because we have created it uh, like deliberately. हमने जानबूझ के उसे ऐसा बनाया है कि वो यूनिक रहे, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करना हो तो उस आधार नंबर से उसे पहचाना जा सके. तो दैट इज योर रेस्टोरेंट आईडी, ताकि आप रेस्टोरेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि रेस्टोरेंट नेम तो सेम भी हो सकता है. देन रेस्टोरेंट नेम.
तो हर एक रेस्टोरेंट आईडी से रिलेटेड उसका नेम बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके आधार कार्ड में आपका नेम होता है, उसी टाइप से रेस्टोरेंट आईडी यानी रेस्टोरेंट नेम। रेस्टोरेंट नेम जब वहां पर इंक्लूडेड है तो आप रेस्टोरेंट आईडी को उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड कॉलम, कंट्री कोड। तो व्हाट इज कंट्री कोड? सॉरी, बेसिकली आपके पास अभी दो फाइल आई है, एक ऑन दी जोमेटो एंड दूसरे वाले आपके पास ये वाली फाइल होगी जोमेटो कंट्री नेम। तो अगर आप इस फाइल पर देखोगे, सेकंड वाली आपकी एक्सेल फाइल पर देखोगे, तो देर इज कंट्री कोड एज वेल एज देर इज कंट्री नेम। तो 1 मीन्स इंडिया, 14 मीन्स ऑस्ट्रेलिया, जस्ट लाइक दिस एवरी कंट्री हैज इट्स कोड। और वापस चले अपने उसी फाइल पर, पुराने वाली फाइल पर, तो यहाँ पर कंट्री कोड का मतलब नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट 162 मीन्स इट इज specifying us about any particular country. Again, why country code? Why we cannot write directly country name? For the unique identification of countries also. Sometimes to recognize countries independently, we provide them a unique code, and this is also under the UN convention. So वहां पर भी हर एक कंट्री को यूएन कन्वेंशन में भी जो यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप है वहां पर भी हर एक कंट्री को एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया गया है टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी कंट्री यूनिकली। Okay, but this is not that code. This is a particular code given by Zomato itself. Country code यहाँ पर दिया गया है. In front of that country code, we have another column, city. तो हर एक कंट्री में अलग अलग सिटीज में रेस्टोरेंट्स हैं, और कौन कौन सी सिटीज में वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं वो सब यहाँ पर लिस्टिंग प्रोवाइड करी गई है कि कौन सा रेस्टोरेंट कौन सी सिटी में अवेलेबल है। जैसे कि कंट्री कोड 162 बिलोंग्स टू फिलीपींस, एंड फिलीपींस में मकाटी सिटी है, वहां पर एक रेस्टोरेंट है। इसके अलावा और भी कई सारी सिटीज हैं और वहां पर रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। देन cuisines, which cuisines these restaurants serve? Maybe French, maybe Japanese, maybe desserts they serve. This restaurant, particular restaurant, only serve Japanese cuisine. Then there are some other restaurants which serve other kind of cuisines like seafood. They serve Filipino items. They serve Indian items as well. And just a fun fact for you, वर्ल्ड वाइड जो इंडियन कुजीन है उसकी बहुत डिमांड है, और ये कॉस्टली भी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कुजीन्स। रीजन रीजन ये है कि इंडियन कुजीन में वेज के अंदर ही या आप एक पर्टिकुलर आइटम के अंदर ही बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा, कॉस्टली होने के पीछे क्या रीजन है? कॉस्टली होने के पीछे ये रीजन है कि इसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, मसाले यूज किए जाते हैं, और हर कंट्री में मसाले इतने प्रोमिनेंटली नहीं मिलते हैं जितने इंडिया में मिलते हैं। इवन काफी सारे हिस्टोरिक इवेंट जो इंडिया के हुए हैं वो तो हुए ही इस वजह से हैं क्योंकि बाहर के लोग जो इन्वेडर्स आए थे, दे केम हियर टू सर्च फॉर सम स्पाइसेस। उन्हें ट्रेडिंग करनी थी स्पाइसेस की, तो वो ढूंढते ढूंढते इंडिया पर पहुंचे। तो इंडियन cuisine is one of the favorite of the world cuisines, and it is very costly due to its spices and due to its ingredients. और सेम चीज मैं आपको पैटर्न यहाँ पर भी नोटिस कराना चाहता हूँ। देखो, जब फ्रेंच जापानीज डेजर्ट सर्व हो रहा था तो इट वाज अराउंड 1100 रुपीज और डॉलर्स, बट when Indian cuisine is there, it will cost you 4,000, just like this, from 1,000 to 4,000 directly. About you can say 3.9% increase directly. So this is kind of cuisines, or you can say foods, which these restaurants serve. Then we have another column called average cost for two. If two-person eat there in that restaurant, how much it will cost to those two persons. So it is not related to particular cuisine, means we cannot identify it is related to a particular cuisine or not, but we can easily find out the patterns that whenever there is, say, Indian cuisine is there or some specific cuisine is there, it will suddenly increase the items rate. It will suddenly increase the bills amount. Okay? So it is a general idea of not related to a particular cuisine, but it is a general idea of bill.
इफ 2 पर्सन आर ईटिंग एट दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, तो कितना उन्हें बिल पे करना पड़ेगा. Okay? And it is in rupees. If you are unable to get the unit, it is in the rupees. Okay. Then has table booking. ये जोमेटो ऐप का डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया. तो दिस कॉलम इज सेइंग कि दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज अवेलेबल फॉर टेबल बुकिंग और नॉट. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल बुकिंग इन रेस्टोरेंट? Actually, you have to make a reservation in the restaurants to for a like you can say for a dinner night or to a particular meeting, you have to make a table reservation there. Okay? So that is what it is saying कि उस रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग अवेलेबल है या नहीं है. यस और नो. अगर जोमेटो से ये कैसे लिंक कर रहा है आपको ये क्लियर नहीं है, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि जोमेटो के अंदर पहले से ये वाला फीचर अवेलेबल था जोमेटो की ऐप में कि यू कैन सर्च द रेस्टोरेंट्स नियर बाय यू and you can check if they are available for online delivery or not, as well as you can go for appointment booking. You can book the reservation there or you can book the table there. Okay. तो ये पूरा जोमेटो का एल्गोरिथम इसी पर बना हुआ है. दैट इज वाई ये आपको बता रहा है कि रेस्टोरेंट हो सकता है जोमेटो के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन ही डिलीवर करता हो. इट माइट बी अवेलेबल इन द जोमेटो फॉर द टेबल बुकिंग पर्पसेस, फॉर द रिजर्वेशन पर्पसेस. Okay. So that is the table booking option for you. Then has online delivery. That means वो particular restaurant online deliver करता है या नहीं करता है. क्योंकि जोमेटो के ऊपर you can check that particular restaurant's rating as well. और अभी ये वाला फीचर हटा दिया. जैसे कि जस्ट डायल या आप कोई गूगल मैप वगैरह यूज करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास आपके नियर बाय रेस्टोरेंट्स आते हैं. अब जस्ट डायल का उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे नियर बाय रेस्टोरेंट कौन से है. वो जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. अगर उन रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब भी है तो भी जस्ट डायल को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जस्ट डायल उनसे कोई सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला है. जस्ट डायल सिर्फ आपको उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको सर्व कर रहा है. तो जोमेटो ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया था स्टार्टिंग में कि आप उसमें देख सकते हो रेस्टोरेंट्स को, और वो रेस्टोरेंट में भी हो सकता है कि केवल और केवल टेबल बुकिंग के लिए अवेलेबल है, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के पर्पस के लिए जोमेटो ने ऐड किए हैं ताकि आप अपने नियर बाय रेस्टोरेंट्स को ढूंढ पाओ. सो दिस टेल्स अस दैट स्टोरी कि कौन सा रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता. देन देर इज नेक्स्ट कॉलम कॉल्ड एग्रीगेट रेटिंग. So this is the average rating that each and every restaurant has received from its customers कि आउट ऑफ 5 लगभग लगभग कितना आप रेट करना चाहेंगे. जस्ट लाइक यू रेट एनी प्रोडक्ट ऑन द Amazon ऑफ फ्लिपकार्ट, और या फिर आप जैसे जोमेटो वगैरह से भी ऑर्डर करते हो, तो आफ्टर डिलीवरी दैट डिलीवरी बॉय टेल्स यू कि प्लीज रेट दिस डिलीवरी. ओके. तो इससे होता क्या है कि आप समझते हो कि ये रेस्टोरेंट अच्छा फूड डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड इट हेल्प्स अदर कस्टमर्स. क्योंकि जब भी आप अमेजोन वगैरह पर कुछ खरीदने जाते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सबसे पहले रेटिंग या रिव्यूज पर फोकस करते हो, करेक्ट? कि वहां पर कितनी रेटिंग मिली है और ये प्रोडक्ट को अगर अच्छी रेटिंग मिली है तभी हम इसे परचेज करेंगे. तो एग्रीगेट रेटिंग इज ऑल अबाउट दैट कि आपको कितना रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5. अच्छा, next, the last column is votes, which tells us about the number of votes this restaurant has received for calculating this aggregate rating. Let's take, let's understand this situation by one example. अगर आप ऐसा समझो कि आपको Amazon से कुछ परचेज करना है, लेट्स से आपको एक मोबाइल फोन परचेज करना है, तो आप मोबाइल फोन सर्च करते हो और आप ऐसा मोबाइल फोन सर्च करोगे ना जहां पर लोगों ने ज्यादा रेटिंग करी हो और रेटिंग अच्छी भी हो. मीन्स 10,000 लोगों ने रेट कर रखा है एंड दैट रेटिंग इज अबाउट 4.3 4.5, तो आप बोलोगे यस दिस इज अ गुड प्रोडक्ट. बट लेट्स कंसिडर सिनेरियो वेयर वन पर्सन हैज वोटेड 5 स्टार रेटिंग टू अ मोबाइल फोन. विल यू बाय दैट मोबाइल फोन? ऑब्वियसली नो, बिकॉज ओनली वन पर्सन हैज वोटेड दैट एज अ 5 स्टार. अगर बहुत सारे लोगों ने वहां पर वोट किया होता कि हाँ 5 स्टार है, तो इट बिकम्स वेरी ऑथेंटिक कि हाँ हम भरोसा कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक रेटिंग. लेकिन अगर ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया है, वेरी लेस पीपल हैव वोटेड फॉर दैट पर्टिकुलर रेटिंग,
So you cannot say that this rating is very much true, correct? So this is what votes about, कि वोट्स कितने मिले हैं और उन्हीं से मिलकर वो रेटिंग बनी हुई है। ओके। तो अभी हमने ये कॉलम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी कि हमारे पास क्या क्या है। रेस्टोरेंट आईडी है, रेस्टोरेंट नेम है, कंट्री कोड, सिटीज, कुजीन्स अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एवरेज कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, टेबल बुकिंग का आइडिया, ऑनलाइन डिलीवरी का आइडिया हमारे पास अवेलेबल है, एग्रीगेट रेटिंग एंड वोट्स भी है अवेलेबल। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि आप इनसे इंसाइट्स क्या निकाल सकते हो, व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दीज डेटा, और यू कैन से फ्रॉम दीज कॉलम्स। कोई ऐसी चीज जो इस डेटा में सामने नहीं लिखी हुई है, बट इसमें बैकग्राउंड पर आप उस चीज को निकाल सकते हैं, या इस डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उस विजुअल को चूज कर सकते हो। तो क्या आप कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सजेस्ट करना चाहोगे इस डेटा के बेसिस के ऊपर, कि क्या क्या हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं? एनीवन? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में रेटिंग्स कितनी है, and how this is going to help Zomato, how this is going to help to take some business decision, कि अगर कंट्री वाइज मुझे ये पता चले कि रेटिंग्स किसी पर्टिकुलर कंट्री में कम आ रही हैं, तो आई विल फोकस ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड आई विल फोकस ऑन क्वालिटी ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो ये एक इंसाइट है जो डेटा में कहीं पर नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टली कहीं पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मुझे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है, सो इट विल हेल्प मी टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। ऐसे ही क्या आप कुछ सजेशन दे सकते हो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के, जिनसे हम कुछ बिजनेस डिसीजन ले पाए, जिससे हम कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए? एनीवन? ओके। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। जैसे एक तो यही है कि कंट्री वाइज अगर मुझे ये पता चले कहाँ कहाँ पर रेटिंग कितनी है, सो आई कैन क्रिएट अ कंपनी, सॉरी, कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। प्लस आई कैन फोकस ऑन टेबल बुकिंग कॉलम। टेबल बुकिंग के अंदर यस और नो वाले कॉलम्स हैं मेरे पास, मीन्स यस और नो वैल्यूज है मेरे पास। और इससे मुझे ये पता चल पाएगा कि कितने रेस्टोरेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो ना ही टेबल बुकिंग कर रहे हैं, ना ही ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। और या फिर अगर मुझे सिर्फ इतना भी आइडिया मिले कि कितने टेबल बुकिंग करते हैं और कितने नहीं करते हैं, तो इससे मैं अपनी सर्विसेज बेटर कर पाऊँ एज अ कंपनी, एज अ जोमेटो कंपनी। यू विल बी थिंकिंग कि हाउ टू इम्प्रूव योर सर्विसेज, राइट? तो टेबल बुकिंग अवेलेबल नहीं है अगर उनकी, तो क्या हम उनकी टेबल बुकिंग अपने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा सकते हैं? इसके लिए हम उन रेस्टोरेंट के पास जाकर टाई अप करें, इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। थर्ड, सेम थिंग फॉर ऑनलाइन डिलीवरी, कि मेरे पास लेट से 10,000 रेस्टोरेंट्स हैं और उनमें से केवल ओनली 2,000 डिलीवर द ऑनलाइन, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर आएंगे और मे बी जोमेटो का जैसे इंडियन क्राउड है, मोस्टली इंडियन क्राउड किस चीज से रिलेटेड है? मोस्टली इंडियन क्राउड आपका रिलेटेड है कि आपको ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए। सो दैट इज वाई ऑनलाइन डिलीवरी वाला कॉलम पर भी हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कितने यसेस हैं और कितने नोस हैं। फिर हम यूज कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट फॉर टू, बाय सिटी और बाय कंट्री, किसी भी मीन से, ताकि हम ये देखें कि किस जगह पर ज्यादा कॉस्टिंग पड़ रही है, यानी कि बिल ज्यादा आता है। एंड देन उस बिल को हम एनालाइज कर सकते हैं विद द रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि जैसे मैं सिटी वाइज एवरेज कॉस्ट फॉर टू ले लूं, एंड देन उसके साथ फिल्टर रखूं कंट्रीज का। तो एक पर्टिकुलर कंट्री पर क्लिक करूं, उसकी रेटिंग चेक करूं और साथ में वहां पर बिल कितना आ रहा है वो चेक करूं। तो इससे मुझे पता चलेगा कि सर्विसेज अच्छी हैं और बिल भी हाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर रेटिंग भी कम आ रखी है एंड बिल इज ऑल्सो हाई, तो दैट इज अ प्रॉब्लम थिंग फॉर मी, राइट? फिर एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं कि हम ये देखें कि कौन सी कंट्री में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, या सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट कौन सी कंट्री में है। या फिर हम इसमें ये भी देखें कि नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स के हिसाब से रेटिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इज देयर एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन पर्टिकुलर कंट्री एंड द रेटिंग दे आर गेटिंग। तो ये चीज भी हम देख सकते हैं। एंड सो अभी के लिए हमारे पास इतनी ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम रखते हैं। फर्स्ट, एवरेज रेटिंग बाय कंट्री। सेकंड, टेबल बुकिंग, yeses and nos. Third, online delivery, yeses and nos. Fourth, average cost for two by their city. Fifth, top five restaurants by number of restaurants and their aggregate rating. तो ये चीजें हम निकालने की कोशिश करते हैं। देन आफ्टर दिस हम अपने विजुअल को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए और भी चीजें उसमें करेंगे। तो पहले हम इसे कैसे लेकर आए डेटा को, दैट इज द मेन क्वेश्चन। और क्या हमें इन डेटा सेट्स को, क्योंकि दो डेटा सेट हमारे पास है, दो डेटा टेबल्स हमारे पास है, क्या इन्हें हमें आपस में लिंक करने की जरूरत है, क्या रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो लेट्स फर्स्ट मूव टू पावर बीआई। सभी अपने सिस्टम पर पावर बीआई ऑन कर लीजिएगा एंड दिस इंटरफेस विल लुक लाइक दिस। हम एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाएंगे, सो लेट्स क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट। एंड ये एक्सेल फाइल है, सो वी विल क्लिक ऑन एक्सेल वर्कबुक। और जहां पर भी आपने अपने सिस्टम पर सेव कर रखा है इस डेटा को, सौरभ, आई हैव सेंड इट इन द चैट बॉक्स, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द चैट बॉक्स। ओके, आई एम रीसेंडिंग इट। तो one by one you have to fetch this file. Just give me a minute, I will be sharing file again. The main file which contains all the columns, and I will be fetching data from this file first. So this is your navigator screen, and you have to select which sheet you want to select. So right now I am selecting this as Zomato table, and there are three options at the bottom: load, transform data, and cancel. That means you have three options now. You can load this data as it is now. Maybe it might be containing any null values or any errors. You can directly load this data to Power BI, or you can transform this data. That means if you want to change a little bit, you want to clean this data a little bit, so you can choose the transform data option. This transform data option will be taking you to the Power Query editor, where you can clean the data, where you can delete those rows and some other columns. So if you want some data cleaning, you can choose the transform data. Otherwise, you can directly go to load data. Right now, this data is very much clean, and we do not need any data cleaning over this data. So we will directly load this data in the Power BI. So click on load. Okay. You can see this file Zomato containing all the columns: aggregate rating, average cost per two, city, country code, cuisines, all those columns which we just discussed. Then we will be fetching another file also, Zomato country one. So
Again, click on Excel data and then click on Zomato country name, then click on open. Again, you will get a navigator and I have to select that sheet which I want. Yeah, I want this sheet. So let's select this sheet and click on load. Now both of my data are loaded here. Let me rename them so it will be easily able to understand that. So let's rename this one. I'm naming it country names, and this one is the Zomato main file. So this is just for your understanding. If you want to skip this step, you can skip this step too. Right. तो सभी का डेटा लोड हो गया है. Everyone, your data is loaded in Power BI. यस सर। If you want to see that data in the form of like a Excel sheet, you can directly go to table view or data view. This will be telling you about this. Like there's a country code, there's a country. Then you can move to Zomato main file. It will also show you the data which is present there. Okay. Do not worry about this 00 because sorting order in Excel and sorting order in table view of this Power BI are totally different. You can see there are different values also present. Okay. It has not turned all the values as 0, but it has sorted all the values. Okay. Now, the next step should be to connect all of these files together because there are two files and we want to connect these two so we can get the country name as well. So we will move to model view and we will connect these two files. But the Power BI always helps you in the making of this data relationship or data modeling. That is why these two files are automatically connected with each other. And if you will click over this, this will show you that there is a cardinality which has been selected between these two tables. There is a cross filter direction which is also selected and which tables are being connected. There is a Zomato main file which is being connected with the help of country code column with cardinality many to 1 with another table called country names and with the help of column country code. So there is a basic requirement while connecting two data tables that you should have one common column. And what is that common column for these two files? That is the country code here. Because country code is present in the Zomato main file also and in the country names file also. So these two files are being connected with the help of this common column called country code. And there is a cardinality selected many to 1. Now, what is the meaning of this cardinality? So when these two files are being connected, you have to explain it how these values are being connected with each other. Okay. And that is what denoted by cardinality. Remember when we saw this file in the Excel, uh, a country can be repeated many times in the Zomato main file because a country can have multiple restaurants. So country code for all these restaurants will be same. Like once this two was being repeated at least 20 times there. Okay. Why that is being repeated? Because once two stands for Philippines, and in Philippines there are various restaurants. There are many different restaurants present there. And for each and every restaurant, country is the same, Philippines, right? So country code will be also same. So in Zomato main file, there will be repetition of this country code because of repetition of restaurant in a particular country. But in country names,
We will not be having the repeated country codes because this is explaining us about the meaning of that country code. And with the help of this country names file only, we were able to understand that 162 belongs to Philippines, one belongs to India, and similarly, there are various other countries. Okay. So this tells us about the cardinality that there is a one value which is present in the country names, and this is connected with the multiple values of the Zomato main file. That is why one to many cardinality. Country name, one value, Zomato main file, many values. Okay? And this arrow is telling us the direction of filtration or direction of data flow, you can say. So you can fetch the data from the country names to the Zomato main file, but you cannot get data in the country names from this Zomato main file because there is only one way directionality working here. So you can fetch data from country names to Zomato main file, and that is what we need, right? We need to analyze our whole project with the help of this Zomato main file because all the values are there. Okay? So these two files are already connected, and when these two are connected, let's move to our report view and let's create visuals one by one. So let's create simple charts first. So we have few problem statements like table booking. How many restaurants have table booking and how many do not have that table booking option? For that, I'm choosing a pie chart or I can also choose a donut chart. Uh, if you are willing to choose the same chart, you can choose the same chart. Otherwise, if you are going for another chart, go for another chart. That is completely your choice. Okay. Right now, I am choosing a donut chart. So I am selecting this donut chart here. And as soon as I will select this donut chart from my visualization pane, it will show me a thumbnail kind of thing, a icon of donut chart, a blank donut chart over here. And it will change the options at the bottom of visualization pane. So I can change option, I can drop the data fields, and by dropping the data fields, it will be able to create this donut chart completely. Okay. First, it is asking me about legend. Now, what is legend? Legend is the basic thing or any basic data element which will change the color according to the different values present in your data. So it want to change the values with the different colors. And that is what donut chart do, right? So I will move to Zomato main file and then I will choose table booking and I will say has table booking. So now on the basis of yes and no, I will receive different colors. You can see yes, for yes, there is a dark blue color and for no, there is a light blue color. The values. How to count that how many yeses are there and how many nos are there? Let's keep the count of table booking. So it will count the total number of yes and total number of no's present in that. Okay. So this is how I have created my first visual, which is telling me about the table booking, that this restaurant has table booking or not. Okay. So please create this visual or you can choose any other chart and let me know when you are done with this. Okay, done. Yes, sir. Okay. So let's do some formatting also over this visual. For formatting, you have to go this format your visual section, and there we will be selecting options. Like, first of all, we want to change colors for that. So how to change colors of these regions as well as
the different slices. So how we can do that? Basically, we have two colors here, and if you want to change the colors, we have to move for the slices. There is a color for yes, and there is a color for no. And for changing the color, it might be good if we will be using the colors related to the project or the logo which Zomato uses. Okay. So how we can get exactly those color which is being used by the Zomato? So we can search for that color over the Google. So let's say I'm searching for that Zomato logo colors hex code. Actually, each and every color has its own color, sorry, hex code. So you can get that hex code over any website. But this website is really great to search for brand colors, which is brandcolorcode.com. Okay, like here you are getting the red color, which is used by Zomato, and here is the white color, which is used by Zomato. And now, how to get these colors in the Power BI? Just copy this hex code from here, go to Power BI, and in Power BI in color section, uh, in the nose, I will be selecting white color. So I will click on more color and then paste it over here. Okay, so I have copied the red color again. I want to keep this red color in the yes, and I want to keep the white color in the nose. So let's copy the hex code of white, copy it, Control plus C, go to no, click on more colors and paste it. Okay, now you can see we have changed the color of yes and no both, and my nose are not visible because of white color, because of matching white color with the background. So what I can do, I can change the background also. I have shared one image also with you. So let's put that image at the background. So first click on empty canvas anywhere in the empty canvas, then go to format. So this will open the formatting of your visual. And in the canvas background, you have to choose the image. So I will be choosing this image and then click on open. And this transparency should be at the 0. It will show me that image as the background. Then I also want my visual to be showing me that white color that the nose. So I will make a more formatting to this visual. I will go to general visual setting, go to effects, and then I will remove the background. Or maybe I can change the color of that background. Okay. And then I will increase a transparency a little bit more. So it seems good, I guess. If you want to create more transparency, that is your choice. You can go for more transparency also. Okay. Few more things I have to change. Go to visual and I will change the position of legends. So I will keep it on top left and I will also change the color of my legends, means text of that legend. So I will be clearly able to see this yes and no which are being written around. So I will go to colors and I will choose the white color. Yes, now these yes and no are clearly visible. And to create some more visibility, I will bold these. Yes. And I will turn off the title. So only yes and no will be visible there. Then let's change the title of whole visual itself. I will keep it as simple as it is. Table booking. Keep it on bold, keep it on underline, and color will be on white. And let's align this also at the center.
We can also increase the font size of our title a little bit. Think this is not too much. Let's keep it on 15. This looks really well. Yeah, few more things to do related to that visual. Uh, let's curve the edges a little bit. So we want visual borders, yes, and color of borders will be white. And we will round up these points a little bit, let's say 17. Okay. Then we will also want to add some shadow to it, and shadow will be of white color. Oh, let's check it on that. Okay, yeah, that is fine. Few more things. Details are not clearly visible. Let's change the icon of, or you can say colors of those details. So go to details label. Let's go to values and let's change the color of these. Keep it on white. Yeah, now they are clearly visible and keep it on bold for more visibility. Okay, I think we can uh, transparent this visual a little bit more. So let's make a little bit more transparency. Okay, 65. Okay, I think 68 is fine. So please do these formatting and let me know whenever you are done. Okay, I hope everyone will be done with this. Now let's move to another visual, another problem statement, which was for online delivery. Again, I am choosing a donut chart for creating this because formatting will be very much easier because I have already done formatting with the donut chart and I will be applying same formatting to another donut chart. Again, same options, legend values. So for the legend, this time I will be putting as online delivery. And then how to count yeses and nos. So again, count of has to be in that. And I want to apply the same formatting in this chart too. So what I will do, I will choose the format window. And I will click over this. It will automatically change the formatting, but few things I have to change by myself. So again, I will go to format your visual section. Then I will choose the slices to change their color. Then no, I will be choosing white for me. For yes, I will be choosing the red. And I have to change the title of visual as well. So I will move to title and I will mark it as online delivery. Online delivery. So my two visuals are ready. Right for now, I am keeping these two visuals here. Then we will check and if there will be need of any kind of replacement, we will be doing that. Okay, so make this visual too, and then we will move further. Check average rating by country so we can make a country specific strategy. For that, I am choosing column chart again.
It is your call. If you want to choose any other chart, you can choose any other chart. For this column chart, it will be asking for x-axis and y-axis. And on the x-axis, I want to keep country name so I can clearly read in which country I am getting the rating. And for y-axis, I will be putting aggregate rating and not actually sum of it, but actually average of this. And again, the formatting, I want to copy this formatting. So let's use the format painter and copy it over the visual. So few things I have to do manually again because format printer cannot copy the whole format as it is. And obviously there are these two visuals and these two have different demands. So their formatting cannot be exactly same. Means they cannot copy it exactly same. So first I will change the color of my columns and I will keep that color as white so it will be clearly visible. Plus, I want to also add data labels at the top of it, okay, which is fine. On the y-axis and x-axis, I do not want these title, so I will receive a maximum range. Also, I do not want values. On the x-axis also, I want to change the color of that text and also bold it. Okay, and it is very much clearly visible. Title also disable. And I will change the title of whole visual average rating by country. Average rating by country. So this makes no sense. Again, follow these steps and let me know when you are done. हेलो Yes, सर, ये जैसे बार के ऊपर वैल्यूज दिख रही है, ये शो करनी थी, वो कैसे होगी? फॉर्मेट पर जाकर डेटा लेबल्स ऑन कर दो. एक से Okay, let's move to next visual, next problem statement. We want to calculate the number of restaurants and their average rating. So let's keep it on the line of the stacked column chart. So let's select this chart. Oh, sorry. First, click on empty canvas, then select line in the stacked column chart. Here on x-axis, I want country. So I will keep country on the x-axis. Then on the columns, column y-axis, I want number of restaurants. So I can count that by restaurant ID. Plus, we want average rating. So let's keep the aggregate rating in the y-axis. And let's check for only countries which are top performers. Let's say I want to check top five. Top five on the basis of rating on the average rate.
And this also on the line of also I want which yeah. Again, same formatting I want to be applied over this combo chart. Use the format printer. And few things I think I have to change. So let's move there, go to lines, change the color of that line. Not blue, I want it red. Plus data labels. I want these data labels, but not their background because they are not clearly visible with that background. Okay. Or I can do one more thing. I can remove the y-axis values, secondary y-axis. These values are being shown here. Mhm. Okay, I have to keep the values, otherwise it will show me flat line. So let's color the secondary y-axis. And if we are getting access, let's remove the data labels here. So it will be clearly visible. And on the line also, I will change the color. In color section, keep it on red. Then on primary y-axis, I will be asking for values as well because it is being shown there on the secondary axis. So let's keep it on primary y-axis too. Yeah. Okay. So this will be your visual, which will be telling you about the relationship between number of restaurants and their rating. Plus, I will be changing title of this whole visual. I will keep it on top five restaurants. Okay. So do these steps and please let me know whenever you are done. Okay, now let's move to the next visual, which will be telling us about the average cost for two persons by city. So I have chosen a stacked bar chart for this. And on y-axis, I will be keeping cities. But there are many cities, so I have to keep a filter or by the country, so I can choose certain cities in a particular country. Then on x-axis, I will be keeping this average cost for two and not sum. Actually, I will be keeping it on average. Plus, I want to keep a filter on the country. So I will keep this basic filter on India for now, and later we can change according to our requirements. Let's do formatting over this too. So let's apply format printer with this. It's all done. Let's just
change the title of our whole visual. That will be average cost for two by city. Yeah, that is fine. Average cost for two by city. Okay. One more thing, we will add few cards at the top so we can see the like quick values. So let's select a card first, and I will be keeping the total cuisines here. So I want sum of all cuisines, or you can say count of all cuisines. Let's keep it on count distinct, so no repeated values will be there between 26. Let's do some formatting related to that. Let's try the format printer and see if any changes happen there. Okay, I have to change the values color as well as their label. The label is off, and let's add a title over this card. Title will be types of cuisines. Okay, I think this is enough for size of this card. I will add another card to it, and this will show me total votes done by users, and I will keep it a field on the vote. The total there are 1 million votes, and I will apply same formatting to this also. And I will add title to it, so I will be able to know that is the total votes. Okay. Another card showing me average cost for two. So let's keep the average cost for two. Mm, which, yeah, same formatting, so format printer. And add a title to it too. So I will be able to know what this is about. This is average cost for two. And one last card showing me total countries. So the card and countries will be added in the row list. Count of countries. Total 15 countries are there. Same formatting I want to be applied over this too. So I will choose format sentence again. And size reduction. Then go to general and then title. And I will name it total countries. हेलो सर। बताओ। सर ये एवरेज कॉस्ट फॉर टू बाई सिटी जो आपने चार्ट बनाया था, इसमें एक हम्म। बार फिल्टर वाला कॉलम्स दिखा रहे थे सर, उसमें फिल्टर कैसे लगाया था? फिल्टर आप कंट्री को रखो, ऐड डेटा फील्ड्स पर लाकर, और यहाँ पर फिल्टर के अंदर जाकर सिर्फ और सिर्फ इंडिया सेलेक्ट कर लो। ये रहा इंडिया।
Okay, I hope it is done. So first we did in this project that we understood the data, what data is about. We created few problem statements. We visualized those problems and then we created report. So this is how you can create visuals in your Power BI, and this is how you will be working over different projects. So that is all for this session. Thank you very much for joining, and thank you very much for being present in this session. Bye bye and take care. Thank you, sir.